Hi guys, my name is Chetan and welcome to my channel English with CD. English with CD में कोई space नहीं है, so कभी type करो तो English with CD with no spaces at all. Now as promised yesterday मैंने promise किया था कि अभी मैं reading topic कर रहा हूँ तो अभी next time मैं speaking लाऊंगा. So speaking topic today is a cue card round part 2 जो कि बहुत ज़्यादा difficult लगता है बहुत सारे लोगों को. ऐसा लगता है कि पता नहीं फिर से इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. बहुत लोगों का ये ओपिनियन होता है कि बड़ी मुश्किल से पार्ट 1 किया था फिर से पार्ट 2 इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. सो अभी इतनी टेंशन की बात नहीं है. अभी जैसे जैसे मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा द वे आई एक्सप्लेन ट्राई टू कॉपी इट, ट्राई टू कॉपी द एक्सप्रेशंस एज वेल एंड ट्राई टू कॉपी द लैंग्वेज एज वेल. एंड बिलीव मी धीरे धीरे करोगे आराम आराम से बोलोगे सो वो सब कुछ कवर हो जाएगा एंड पता भी नहीं चलेगा. एंड वन थिंग आई कीप ऑन सेइंग हमको याद रखना है कि हमको इंटरव्यू नहीं लेना ही. एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, फैमिली वाले किसी से बात करो, आमने सामने बात करो, नॉर्मल डिस्कशन. हमको टोन भी वैसे ही रखना है, एक कैजुअल सा. सो आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन अ वेकेशन. अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं? व्हेन यू वेंट, वेयर यू वेंट कॉमन, विद होम एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कभी हम अगर बीच में कंफ्यूज हो जाए तो हमको मेन टॉपिक पे ध्यान रखना है. अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो ये ध्यान रखो कि जो मेन टॉपिक है था उसके आसपास बोलते रहो तो टॉपिक ठीक चला जाएगा. ओके, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट. इन बिटवीन आई ऑल्सो गिव यू वोकैबुलरी वर्ड्स जहाँ जहाँ होंगे मैं बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर एवरीवन टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग. कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना. सो पहला वर्ड. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. लाइक द वीडियो, शेयर इट. नहीं भी पसंद है तो भी शेयर कर देना क्योंकि अगर कुछ लगता है आपको कुछ चेंजेस चाहिए सो डू लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू. सो लेट्स बिगिन. सो I feel that vacation is a time where you feel refreshed and relaxed and you want to enjoy that time. It can be with your family or friends. So when I talk about vacation, the last vacation I went to was with my friends. It was a school trip to Kulu Manali and it was during my 12th grade. So it was a time where it was not very hot, it was neither too cold as well. It was during the month of May and June. However, the surprising factor was that snow was still there. So the whole Manali was actually covered with frosty white mountains. Now frosty white mountains का मतलब होता है कि पूरी तरह जब स्नो से कुछ कवर्ड होता है ना तो हम उसको frosty white बोलते हैं, बिल्कुल pure white. So when we landed, when we reached Manali, the first place we visited was Salong Valley. Now, Salong Valley is a place where you have to climb and you have a couple of things nearby to see. You have a market behind Salong Valley. So that was one of the most interesting factors for me as हमको थोड़ा सा मौका मिला shopping करने का. So it was one of the most good things which I experienced. However, I actually went through a tragedy out there. So that's something which has really happened with me. So while I was going up the valley, I slipped. So I was wearing those sport shoes and those sport shoes were a little slippery. So I slipped down the valley and I was literally, when I came down, I was rolling like this continuously. Thankfully, thank God, I did not get hurt. From there on, actually, I was more scared of heights. And after Salong Valley, I remember when we reached Rohtang Pass, the main place जो है कुल्लू मनाली का से जो कि लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ तो जाना ही जाना है. So when we reached Rohtang Pass, it was actually an awesome place to visit. Believe me, if you go to Manali, make sure you're visiting Rohtang Pass as well because that is one place which you cannot miss. Especially someone who likes snow, it is an awesome place. So when we reached there, as a ritual, I'd say, we had heard stories that whenever you go to a hill station, especially in snow, it is mandatory for you to eat Maggi. So we reached up there and we actually traveled a little up so that we can have Maggi.
And when we ordered Maggie, believe me, the Maggie was tasting brilliant. It was actually out of the world. मुझे लगता है ऐसी मैगी शायद हमने कभी भी नहीं खाई थी. It was the first time when we were experiencing that thing. And after Silong Valley, we went to a couple of other places, like we went to Hadimba Temple, we went to a couple of other places as well. So overall, I'd say it was an experience which was a really memorable one, and I still remember it by heart as to what happened, how we enjoyed, what we did, because it was a trip जहाँ पे हम लोग सारे friends गए थे. It was a trip with friends. We had a lot of teachers as well with us. So overall, it was a wonderful experience. Now comes the time, guys, for vocabulary. अभी I'll explain you vocabulary. अभी मैंने जैसे word use किया था wonderful. Instead of wonderful, you can say outstanding as well. You can say it was an astonishing experience. It was a surprising experience. जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा. So you can also say I was completely astonished. You can also say that I was completely bowled over. You know, bowled over का मतलब हो गया मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैं बस एकदम देखा तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह पे आ गया हूँ. You can use the idiom on cloud 9. You can say that when I reached the mountains, I felt like as if I'm on cloud 9. You can say that it was so, I was feeling so near to the clouds that it was like I'm touching the sky. So that was the experience I was feeling. So that is for today, guys. Thank you so much for your time. If you please subscribe the channel, like भी कर देना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. So thank you so much for your time. कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा, so कल मैं एक पार्ट 1 टॉपिक साथ में अपलोड करूंगा या पार्ट 3 करूंगा, दोनों में से कुछ करूंगा. एंड अभी मैं बताता हूँ, सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेनिफिट क्या है चैनल का. तो मैं रेगुलर स्पीकिंग वीडियोस डालता रहता हूँ ज़्यादातर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. सो आपको रेगुलर वो पता चलता रहेगा कि हमको किस टॉपिक पे क्या बोलना है. सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्या क्या बोलना है. अभी मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है. तो मैं एक आइडिया देता हूँ, जैसे हम स्टार्ट में बोल सकते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट,